बीएमसीसी आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस वर्मा एंड इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट द राइट स्ट्रैटेजी, द राइट अप्रोच, द राइट प्रोसेस, द राइट माइंडसेट needed in order to crack examinations like UPSC or APCS or any other kind of PCS examinations if you are targeting. So we'll not talk about the pattern of UPSC, all those things. We might have some other video to discuss about those things. If you guys need such video which talks about the pattern of the examination, we'll have a separate video. Just put it in the comment section. We'll drop the another video for you. But for now, we'll talk about the right strategy for this examination. So I have written certain things so that we do not waste much of the time in writing. So when I say the right strategy for examinations like UPSC or APCS, there are three pillars of this preparation. See, somebody take 1 year, 2 year, 5 year, and कुछ लोग के लिए बस सपना रह जाता है. So let's devise a strategy, let's devise a plan before actually starting the preparation of this examination, so that we do not get into the trap of those 5 years and 8 years. At least we have a plan so that we can be at least sure to be successful in this journey, in this preparation journey. So I'll talk about three pillars here for the right strategy, the right process, and the right mindset for the examination. The first pillar is the understanding the philosophy of this examination. If you prepare for UPSC, PCS, सबसे पहला काम जो आपको करना है, look at the syllabus. First thing, before you decide that you want to go for this preparation, इसके पहले कि आप किसी कोचिंग को फीस दो या अपना 2 साल या 1 साल ये डिसाइड कर लो कि प्रिपरेशन करनी है, बिफोर दैट जस्ट हैव अ लुक एट द सिलेबस. यूपीएससी की साइट पे जाइए या जिस भी पीसीएस को आप टारगेट कर रहे हैं उसकी साइट पे जाइए. ऑफिशियली आपको सिलेबस दिया होता है. डाउनलोड दिस सिलेबस, 4 से 8 घंटे उस सिलेबस को रीड करिए. ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या एरियाज हैं जो एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, एंड अगेन equally important, is the previous year questions. I'm not saying कि जब आप पहली बार previous year questions को देखोगे तो you would be in position to understand the requirement of that question. No, that's not practically possible. हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का आंसर पता हो, but the highest likelihood is कि 90% of the questions के आंसर्स नहीं पता होंगे. But इसको हम लोग इसलिए देख रहे हैं so that we can figure out कि what kind of questions are being framed in the examinations which we are targeting. तो सिलेबस पता होगा कि क्या एरिया से क्वेश्चन पूछेगा, इतना बड़ा एरिया होगा, और स्पेसिफिकली कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. क्या उन क्वेश्चंस को देख के अपने को लग रहा है कि इफ सच क्वेश्चंस वुड बी फ्रेम्ड, will I be in position to write such questions or not? And again, here comes the check also. The another check comes here. अगर आपको सिलेबस पढ़ने में if you feel that कि आपको 20% ही सिलेबस समझ में आ रहा, क्वेश्चन तो आई एम नॉट सेइंग, सिलेबस में भी if you are able to figure out 20% of the given syllabus, it means that sir you need some guidance. And if you are in position to figure out 60 to 70% of the syllabus, कि exactly broadly कहां से एरियाज अगर मैं कवर कर लूं तो मेरा ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा. Take my word, you do not need a coaching. But again, decide this. Why I emphasize upon taking classes? Because अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो you will take might be 2 years, 3 years. और जो कोचिंग ले रहे हैं they might, their process, the preparation journey might get expedited. तो अगर आपको बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना तो 70-60% अगर आपको सिलेबस आता है तो डू नॉट गो फॉर अ कोचिंग. बस अगर सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये जो सिलेबस है ये मैं पढ़ूं कहां से, इफ यू आर टेकिंग टाइम फॉर दोज थिंग्स, so definitely take my word, you need a coaching, you need
somebody who can properly guide you. So, anyway, coming to the second pillar of this examination. When I say second pillar, it is the most important pillar. The process of preparation. कैसे prepare करना? How actually we need to prepare? So, obviously, it will require a duration of around 12 to 18 months when you target examinations like UPSC or APCS. So make sure कि 10 से 12 महीने या 12 से 18 महीने, again depending upon the caliber of the individual, I'm not saying that this is the only right statement, but again usually this much time will be taken if you work honestly, sincerely. So it will include, this process will include three things. First is the accumulation of knowledge. You have already seen the syllabus. Now you know कि क्या-क्या areas अपने को पढ़ने हैं. For that you need to accumulate knowledge. You need to gain knowledge from somewhere. मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको किस केस में गाइडेंस लेनी है. गाइडेंस व्हेन आई से द बेस्ट गाइडेंस इज गिवन बाय अ डेडिकेटेड कोचिंग. कोई भी कोचिंग जो आपको लगता है फैकल्टीज आर गुड, they are making the things simpler for you. And how do you decide the simplicity? You have already seen the syllabus. You are already looking at the previous year questions. If a coaching is able to do that, that coaching is good for you. So go for guidance. Some material will come from here, some knowledge will come from here. Rather, majority of the knowledge will come from here. But it is not the only source of knowledge. Second is certain basic readings, certain basic books, and the first thing it includes is the NCERTs. A question comes up कि सर 6 से 12 तक की सारी NCERT पढ़ें, तो आंसर इज outrightly no. बट अगेन क्या क्या पढ़ना है उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बना सकते हैं. बट टेक माई वर्ड, NCERT इज द मस्ट रीडिंग फॉर UPSC और APCS. कौन कौन सी बुक्स, उसके लिए अलग से बात करेंगे. एंड इफ यू नीड द लिस्ट ऑफ दोज NCERTs, just drop a message in the comment section. They'll reply. If they do not reply, I'll personally reply. Don't worry. Then third is newspaper reading. Newspaper reading. So this newspaper reading initially आपको बहुत समझ में नहीं आएगा, but initially from the day one you should develop the habit of newspaper reading. You should read a newspaper for the sake of reading. और जैसे जैसे आपका ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, जैसे जैसे यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, यू बी इन पोजिशन टू फिगर आउट कि इस न्यूज़पेपर से व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. बट फ्रॉम द डे वन, एटलीस्ट फॉर 45 minutes to 1 hour, read the newspaper. Whatever things you are understanding, just for the sake of reading, read it. That is the part of accumulation. So these are the three sources that you cannot escape while preparing for these examinations. Then coming to the second part of the process, gaining knowledge is not sufficient in UPSC. So second part over here comes in. See, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो या किसी कोचिंग में गाइडेंस लेते हो, तो यू आर बीइंग टॉट सब्जेक्ट वाइज. मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं, मैं सिक्योरिटी पढ़ाता हूं, इंडियन सोसाइटी पढ़ाता हूं, तो आई टीच द सब्जेक्ट्स in the given time period. But again, there is huge interlinkage. In fact, I'll do that in the classroom also. I'll tell you how to interlink the different subjects given. But again, that knack has to be learned by you. That interlinkage part has to be learned by you. And once you get good at the interlinkage part, a good deal of the job is done. So interlinkage is very important. That is what integration means. So interlinkage of two things. One, the subjects, the different subjects that you study, and also the current affairs.
जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट शुड बिकम द पार्ट ऑफ द योर नोट्स दैट हैज बीन गिवन टू यू बाय द टीचर। उसका पार्ट कैसे बनाओगे, until unless you know how to integrate it. So that is very important. मैं क्लास में इस बात को बहुत डिटेल में बताता हूं कि इस चीज को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे। Again, coming to third part, and this is the most important part, guys. See, over here accumulation of knowledge, किसी को हो सकता है 50% ऑफ द सिलेबस आता हो, 60% ऑफ द सिलेबस आता हो, किसी को 90% आता हो, जो बहुत स्टूडियस होगा, बहुत सिंसियर होगा, इट इज ओके। 60%, 70%, 80%, यू ऑल आर द कैंडिडेट दोज हु गेट सिलेक्टेड। आपको 50-60% भी सिलेबस आता है तो यू माइट गेट सिलेक्टेड, प्रोवाइडेड यू आर गुड एट दिस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर गुड एट practice. When I say practice, see, revision is the key to any examination. If you do not revise it, take my word, in school days my maths teacher told me, maths के teacher मेरे कहा करते थे, this makes a mathematician perfect. So over here it is not maths, but the reality lies in those words. So practice कैसे करना है? 3 things, again only 3 things. Start with previous year questions. यहां पे आपने बस देखा था previous year questions को पीछे वाली स्लाइड में, बट यहां पे start practicing, start attempting those questions. जो आपको क्लासरूम में टॉपिक पढ़ा दिया गया, सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया, उनका प्रैक्टिस करना शुरू करो. बेस्ट प्रैक्टिस विल स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों. Start solving these questions. Bring those questions to the teacher if you are not able to write them, if you are not able to solve them. That is the first thing. You cannot skip this part, take my word. This will help you in revising each and every part of the syllabus. If something is missed out, go for some test series. Prelims test series as well as mains test series. Take my word again, यहां से आपकी फाउंडेशनल लर्निंग होती है सिलेबस की. यू गेट टू नो कि क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है. बट जो पॉइंटेड मोस्ट रेलेवेंट लर्निंग होती है दैट कम्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द टेस्ट सीरीज. सो मेक श्योर कि अगर आप यहां कम भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इट इज ओके. ये ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे विद टाइम. जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी और साइंटिफिक थिंकिंग एटीट्यूड आप रखोगे, एंड इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं. इफ यू आर मिसिंग आउट दिस पार्ट, आई एम रियली सॉरी टू से, यू हैव मेड ऑल द एफर्ट्स टू गो इन वेन. सब फ्यूटाइल जाएगा. तो मेक श्योर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of the second pillar, the process. Or this is the most difficult part. Again, this is where you need to work hard, and this is where जो लोग बोलते हैं कि there is no substitute to hard work. The hard work has to be there. यही स्मार्टनेस है. अगर आप वेल प्लान हो तो दिस इज स्मार्ट स्टडी. इसके अलावा स्मार्ट स्टडी कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग कॉल्ड कि आप कुछ बहुत स्पेशल करने वाले हो. यू गेट प्लान्ड एंड यू फॉलो दैट प्लान. Once you commit to the plan, you follow it. Anyway, come to the third pillar. Third pillar, I said, problem solving attitude. See, the major challenge in UPSC preparation is to stay motivated for these 12 to 18 months. It's not an easy task. बातें करना आसान है, but daily 6 to 8 hours for another 1 year daily वो काम करना is not an easy task. But again, keep one attitude in the mind, and that is what I said, the right mindset, the problem solving attitude. Two things keep in mind. One, the scientific thinking. And when I say scientific thinking, I'm not saying that typical definition of science that it should have cause and effect relationship. No. I'm saying scientific thinking for me,
for this preparation means that you already know the syllabus, you already know the previous year questions. You should always remember that ultimately your test will happen here. जो आप एग्जाम देने जाओगे उसी का ये कुछ क्वेश्चंस हैं. So if you are not able to solve these questions properly related to prelims or means, take my word कि अभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है. That is the only criteria to check yourself whether you are in the right lane or not. तो इसलिए हमेशा ये बात सोचते रहिए कि whether I am in position to solve those questions or not. So that is why scientific thinking. But होगा, हो सकता है there is a topic, there might be an entire subject जो अपने को बहुत मजा नहीं आ रही पढ़ने में. हो सकता है टीचर मजेदार ना हो सकता है आपका अपना इंटरेस्ट ना हो. सर आपका बैकग्राउंड है जो एंटायरली डिफरेंट है उससे और आपको उस सब्जेक्ट में मजा नहीं आता है. Then also sir you need to keep in mind the only thing that you have to do is solve those papers in the examination halls. So you cannot skip that part. So do one thing, something called iterative learning. Iterative learning means repeat that task again and again with the intent of improving. And take my word, if you do that every now and then, if you repeat it again, maybe slowly, if you are not very good at, IQ level, might be, I don't know. But again, if you do it regularly, consistently, this will give you results. Iterative learning means do it every now and then. So this is about the 3 pillars. This is about the right strategy, right process, right mindset to clear these examinations. If you have anything in your mind, just drop a message in the comment section. We'll take up those videos again. And see, I do not guarantee that if you follow this, you are going to be successful. And nobody can give you guarantee, I cannot give it in writing. But take my word, this strategy has the likelihood of getting you selected more than 95%. Again, it is not the only right strategy. But if you follow this for around 10 to 12 months or maximum 18 months with sincerity, with dedication, chances are likely that you'll sail through, and that likelihood is more than 95%. Thank you so very much.